Coming in after targeting the filming of Har Har Mahadev, you now have NCP leader Jitendra Awhad, who in fact has been detained. Remember, this was the same NCP leader who had barged into a movie theatre a couple of days ago because he had objections as far as the portrayal of facts with Chhatrapati Shivaji is concerned. We had seen some strong reactions from the BJP as well, who had gone on to say that while right to protest is your right, but you cannot take law and order in your own hands. In the backdrop of all of that, I believe this NCP leader now has been detained for hooliganism. We'll try and get more details of what really has happened, but we're putting out those visuals of what had happened a couple of days ago when, as I pointed out, you had this NCP leader, Jitendra Awhad, who had barged into a movie theatre and then caused a bit of ruckus as far as the filming of Har Har Mahadev is concerned. Let me bring in my colleague Mir, who's been tracking those developments. Mir, we'd seen some very strong reactions, from the BJP and others when this leader had walked into the theatre. I believe he's now been detained for hooliganism. Is that correct? Yes, that's what we understand. And what we know at this point is that he's made series of tweets which really which really talk about the fact that while he was called at the police station, he was told a different story, but the facts turned out that he was informed by the police officials that he is arrested. He clearly at this point defies any sort of wrongdoing and saying that this is clear misuse of police power is what he really claims through his tweets at this point. But this is, in a sense, a big blow. Remember, he was at the forefront of this entire raging controversy around this film. And now we are seeing arrest of Jitendra Awhad, who is a very senior leader of the NCP, held a position in the MDA government also and a ministerial berth. So one really is shocked and we are waiting for more details on this. True. To emerge as and when this story develops. True, Mir, but this is going to be embarrassing for the NCP. As you're rightly pointing out, the leader continues to be defiant. I want to go back to what happened a couple of days ago. At that time, you had a police who had filed a case under sections of the Indian Penal Code and the Maharashtra Police Act pertaining to unlawful assembly, rioting and causing hurt, because we're understanding his supporters not only wanted to stop the screening, but they also beat up a man who tried to stop them. Give us a backdrop of what all happened in the last couple of days. Absolutely. So ever since the release of this film called Har Har Mahadev, which was strongly objected by NCP, saying that the film doesn't really, it's not based on history. It is tweaking history. It's misrepresenting history, and this is related to Chhatrapati Shivaji Maharaj, and that is something which the NCP and leaders like Jitendra Awhad were opposing. In fact, they had threatened to disrupt the release of the film, and which they were successful in certain parts of Mumbai, specifically in Thane and other areas where the screening of the film was disrupted with force, is what we understand, and that's why there were specific cases on NCP workers as well as leaders like Jitendra Awhad, looking at the kind of gathering and the kind of muscle that they used in order to carry on this protest. And also in a sense, some would say that the audiences and the viewers who were trying to step into the theatre were restricted with sheer force, and the kind of gathering that was present to protest the film, that has, now clearly turned the other way. And okay, Mir, I'll just request you to stay on with us. I apologize for interrupting. Brijmohan Srivastav of the NCP now joining us. Sir, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. NCP के आपके जो लीडर हैं जितेंद्र अवहाद, उनको आज डिटेन कर लिया गया है. आपका पहला रिएक्शन? सर, आवाज आ रही है आपको? ब्रिजमोहन जी, आपको आवाज आ रही है? Okay, we'll try and re-establish that connection with the NCP leader Brijmohan Srivastav. But let me quickly go back to my colleague Mir. Mir, I apologize for interrupting. Please go ahead.
Absolutely. So the allegation on the NCP leader, especially Jitendra Awhad and others who gathered to restrict and disrupt the screening of this film called Har Har Mahadev and Har Har Mahadev is the fact that they not only tried to disrupt the screening but also threatened some of the viewers and moviegoers from going inside the theaters, and that is the allegation. And that is something based on which the police has now acted. Now, what Awhad is saying in his series of tweets is that when he went to the police station, the officers tried to, just get a casual conversation. Meera, I apologize for interrupting once again. We want to take a reaction from the NCP. Brijmohan Srivastav of the NCP now back with us. Brijmohan जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अभी ये खबर आई है कि एनसीपी के जो लीडर हैं जितेंद्र अवाध, उनको अरेस्ट कर लिया गया है. आपका रिएक्शन? देखिए, इसमें हम लोगों का कहना बहुत स्पष्ट है. ये सारी इस पूरे मामले में जितेंद्र अवाध जी से कोई ऐसी भूमिका नहीं है जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वहां उस दिन जब वो गए थे तो उन्होंने वहां जाकर जो सिनेमा मालिक थे उनसे ये अनुरोध किया था कि इस फिल्म के प्रदर्शन को यदि आप ना करें तो बेहतर होगा. लेकिन वहां जो कुछ दर्शक थे उनके आपसी झगड़ों के कारण, बल्कि वहां तो आदरणीय जितेंद्र अवाध साहब ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की थी. तो ये पूरी तौर से एक राजनीतिक मामला है जिसमें चूंकि वहां सरकार इस समय खोखा सरकार है, तो खोखे सरकार की अपनी जरूरतें हैं, उसके हिसाब से उन्होंने आज बोल रहे हैं और जो तस्वीरें हमारे साथ हमारे पास आई हैं और उनको हम अपने टीवी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, वो एक दूसरी ही कहानी बताते हैं. हम देख सकते हैं कि जो आपके लीडर हैं जितेंद्र अवाध, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो एक्चुअली हाथापाई भी करते हैं वहां के कुछ जो दर्शक थे. तो बीजेपी और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का ये सवाल है कि अगर आपको कोई दिक्कत है फिल्म से तो आप उसको एक तमीज से भी इस बात को आगे सामने रख सकते हैं. हाथापाई करने की क्या जरूरत है? तो लेकिन हाथापाई जितेंद्र अवाध साहब ने तो नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बीच बचाव किया. वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ. अगर उनके समर्थकों ने कुछ किया है तो उन समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई तो वाजिब है जिन्होंने कानून तोड़ा है. लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर बीच बचाव कर रहा हो, उनको गिरफ्तार करने का मैं औचित्य समझ में नहीं आता, ये मैं कहना चाहता हूँ. और निश्चित रूप से चूंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है, अब मामला चूंकि न्याय के पराधीन है, तो अब वहां पे तय होगा, कोर्ट से तय करेंगे. और हम लोगों को पूरा विश्वास है देश की जुडिशियरी पे. अभी आप देखिए कि संजय राउत साहब के मामले में भी जिस प्रकार से ईडी ने तानाशाही की थी, तो उसका जवाब अंततः कोर्ट से ही मिला है. और हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भी जितेंद्र अवाध साहब को पूरी तौर से कोर्ट उसको देखेगी, मामले पर संज्ञान लेगी और इनको वहां से राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा इनको. अच्छा, मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ. इन जितेंद्र अवाध ने तो काफी सारी चीजें कही थी कि उनको क्या दिक्कत थी इस पिक्चर की स्क्रीनिंग से, हर हर महादेव. क्या उनकी पोजीशन और एनसीपी की जो पोजीशन है वो सेम है? जी, मैं आपकी आखिरी वाला सेंटेंस नहीं सुन पाया मैडम, प्लीज. मैं पूछना चाहती थी कि जो उनकी जो पोजीशन है, क्योंकि उनको तो काफी दिक्कत है, जैसे ये फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी, उनको लगता है जो छत्रपति शिवाजी के जो कहानी दिखाई गई है वो सही नहीं है. एनसीपी की क्या पोजीशन है इस पे? देखिए, एनसीपी का इस मामले में बहुत ही स्पष्ट मामला है कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एग्जीबिशन पे विश्वास रखते हैं. हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी ने हमेशा इन विचारों को महत्व दिया है कि देश में सारी बातें स्वतंत्रता के साथ कहने का अधिकार है, और यदि किसी को कोई आपत्ति होती है तो हम लोग उसकी शिकायत कर सकते हैं. कई उसके लिए डिफरेंट फोरम से यहाँ जाके शिकायत की जा सकती है. लेकिन वहाँ उस दिन जो घटना घटी है उसके पीछे जो हम लोगों को जानकारी मिली है, हमें जो बताया गया है कि वहाँ के दर्शकों ने उस फिल्म को देखने के उपरांत इस बात की शिकायत की थी कि किसी भी हालत में इस मामले को इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. तो वो इसी बात को कहने गए थे कि भाई दर्शकों की शिकायत तो आप उस शिकायत के ऊपर थोड़ा सा संज्ञान ले लीजिए. लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनी है वो आपके पास है, आप देख ही रही हैं उसमें. लेकिन दूर दूर तक उसमें कहीं जितेंद्र अवाध जी कहीं कानून का उल्लंघन कर रहे हो, या उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की हो, या उन्होंने किसी के साथ हाथापाई की हो, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है. आपकी वीडियो क्लिपिंग्स में है ये सारी चीजें. तो मैं सोचता हूँ